की एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि आप कृपा करके स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। श्री अश्विनी वैष्णव जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात एवं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकारों में माननीय मंत्री महोदय, टाटा एवं सीजी पावर के अधिकारी, दोनों राज्यों के अधिकारी, ताइवान से जुड़े साथी और कॉलेजेस में जुड़े 30 लाख से अधिक यंग माइंड्स, ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब उसके भविष्य की नींव रखी जाती है, जब उसके सपने पूरे होते हैं और जब उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। आज राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले करने वाले और अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, 1962 से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडरशिप के कारण मिली है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आने वाली कई जनरेशंस विकसित भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी। आज एक साथ तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन चार को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इन 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नॉर्थ ईस्ट आसाम में आज लग रहा है। कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमेरिका में, यूरोप में, जापान में मेड इन आसाम, मेड इन गुजरात और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाली कारें दौड़ेंगी, लैपटॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मोबाइल फोन चलेंगे। आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में एक और खासियत है। डबल इंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है, ये चारों के चारों प्लांट इसका उदाहरण है। माइक्रोन के प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जून 2023 में अप्रूवल किया। 90 दिन के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने जमीन दी, सारी की सारी परमिशंस दी और फैक्ट्री का काम चालू हुआ। वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। टाटा और सीजी पावर के प्लांट 29 फरवरी 2024 में अप्रूव हुए और 15 दिन के अंदर अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों प्लांट्स का भूमि पूजन कर रहेंगे। ये विश्व में रिकॉर्ड है। ये संभव होता है तभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज हमारे साथ यंग और एनर्जेटिक 30 लाख से ज्यादा जो साथी वर्चुअली जुड़े हैं। आपसे मैं कहूंगा साथियों, नौजवान साथियों,
आपके भविष्य का निर्माण करने वाली ये इंडस्ट्री है, आपके फ्यूचर को सेव करने वाला ये फैसला है। और ये फैसला केवल और केवल मोदी जी ले सकते हैं। इसलिए जब आप अपना निर्णय ले आने वाले कुछ दिनों में, तो याद रखना, आपके भविष्य का ध्यान केवल और केवल मोदी जी रख सकते हैं। इस बात को आप अपने मन में रखना जब आने वाले कुछ दिनों में आप अपना देश का फैसला लेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। निसंदेह आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा होने वाला ये शिलान्यास आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। अब मैं चेयरमैन सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड श्री विलायन सुबैया से संबोधन का अनुरोध करती हूँ। श्री विलायन सुबैया। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Chief Ministers of Gujarat and Assam, Honorable Ministers Vaishnav ji and Chandrasekhar ji, colleagues, our partners and guests, Namaskaram. 75 years ago, my grandfather manufactured India's first bicycle. That was what the country needed at that time. Times have changed. Semiconductors are the new bicycle. These are the very basis of the modern manufacturing economy. They are critical to India's Atmanirbharta. Today is not just about laying the foundation stones of Tata's 2 plants and our plants, but the very foundation of India's emergence in the modern economy and an announcement of India's arrival on the global semiconductor stage. Why did we have to wait until now for this moment? What Bharat is now witnessing is as revolutionary as independence itself. We are seeing an awakening and a resurgence that India has never ever seen before. This government's ability to foresee what Bharat needs to be a world leader is absolutely unprecedented. Government and industry are collaborating effectively, leveraging each other. मैंने सोचा अगर चिप्स का है इंतजार तो सीजी है तैयार। Until now, Indians have helped other nations strengthen their leadership position in the world order. Brain drain. When I graduated from IIT, 140 students out of my class of 290 left for the US. This will no longer be the case. From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat. We are fortunate to have a very strong Japanese partner, Renesas. We asked Renesas who will be leading the initiative from their side. And they said Viresh Patel, who is here with us. मैंने बोला ये वीरेश पटेल तो जापानीज थोड़ा है, but this is the nature of the world today. Country or company, Indians are in leading roles, and that's something we ought to be proud of. We are excited to set up this initiative in Gujarat. We come from Tamil Nadu. In Tamil Nadu, we have 79,000 temples. Gujarat has 50,000. It seems that both Tamils and Gujaratis are fond of going to temples. And that's basically because we all understand that there's something much bigger than ourselves. For me as well, yoga and meditation is important. In India, we understand that sadhana and bhakti actually help us become better leaders, help increase our intensity, our energy, our focus. So together, in the presence of Adi Yogi, we will create an intensely powerful semiconductor ecosystem that is built on the foundation of spirituality. I've written a few lines in lighter vein. हम सब हैं एक परिवार, हमारा डोसा आपकी चाट.
देश का विकास सेमीकंडक्टर्स के साथ, तेज रफ्तार सीजी के हाथ। टू राइजिंग इंडिया, जय हिंद, प्रणाम। Indeed, it's a historic day of silver line in the sky of growth and development of Bharat. और अब समय है चेयरमैन टाटा ग्रुप श्री नटराजन चंद्रशेखरन द्वारा संबोधन का। महोदय, आपसे विनती है कृपा करके अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री नटराजन चंद्रशेखरन। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. Bahut dhanyawad. I am also privileged to welcome Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Chief Minister Shri Himanta Biswa Sarma ji, and Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji to this event. Dignitaries from Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, India Semiconductor Mission, governments of both Gujarat and Assam, distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the media. I am thankful to all of you for your presence here in Dholera and Jagi Road, Assam, for the foundation stone laying ceremony of India's first semiconductor fab and the first indigenous semiconductor assembly and test facility. Today is indeed a very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera and Jagi Road, one in the east and another in the west, 2,500 kilometers apart. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. The ecosystem from across the globe will mobilize to have India as their preferred semiconductor destination. For our fab, we are very excited to partner with Taiwan's Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation. The executives from PSMC are joining this meeting today on video. They have given us access to a very broad portfolio of technology. Our partner is a leading foundry company with very extensive manufacturing experience in running mega fabs. The semiconductor industry is innovation driven. It is another foundational industry, like steel was steel is for physical infrastructure. Semiconductor is the foundational industry for everything digital. We look forward to closely partnering with industry, academic institutions, and every ecosystem player to build semiconductor talent and infrastructure of tomorrow right here in India. We will be creating more than 50,000 jobs in this journey, and this is just the beginning. Today, every major economy is looking for self-sufficiency in semiconductor supply chain. There are three fundamental reasons for this. First, the chip shortages during the pandemic made us all realize the importance of electronics and our dependency on the global supply chain. Second, with the cyber warfare becoming a commonplace, self-sufficiency in semiconductors is a must and a matter of national security. And finally, domestic semiconductor manufacturing ecosystem is a must-have to galvanize the indigenous product ecosystem of tomorrow. In the spirit of the Tata Group,
and its core value of pioneering, we will deploy our deep customer insights and develop innovative solutions with agility, boldness, and courage. From the very beginning, we have been fortunate to pioneer several businesses, and today our journey of building semiconductor chips has begun. Semiconductor chips have a defining role to play in every industry. Like Minister Vaishnav said, automotive, communications, advanced computing, AI, green tech, industrials, medical devices, defense, consumer electronics, you take every industry, semiconductor chips are very foundational in nature. For the first time, India will have capabilities to serve semiconductor demands of both domestic and global customers with the chips built in our factories in India. I would like to thank you for your trust in the Tata Group as we embark upon this historic journey of India's decade, chips for Viksit Bharat. Finally, in the words of our founder Jamsetji Tata, the community is at the heart of everything that we do. We will build world-class social infrastructure and thriving communities both in Dholera and in Jagi Road in partnership with the Government of Gujarat and Government of Assam. Thank you again for this opportunity, and thank you, Prime Minister, for your leadership and vision and laying the foundation for a developed India. Thank you very much. धन्यवाद महोदय। वाकई में किसी महत्ता को समझना और फिर उस महत्ता को विकास से जोड़ना ही दूरदृष्टि है। पूरा भारतवर्ष देश के विकास एवं आत्मनिर्भरता को विभूषित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपार स्नेह की धरोहर से अलंकृत कर रहा है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा शिलान्यास होने वाले सेमीकंडक्टर यूनिट्स में असम की ATMP यूनिट भी शामिल है। तो आइए जाने असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मेरा सविनय निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी से कि आप इस शुभ घड़ी में अपने भाव व्यक्त करें। श्री हेमंता बिस्वा शर्मा। भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की श्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, CG पावर के चेयरमैन श्री सुबाया जी, आज हमारे साथ कनेक्ट हुए सारे अतिथिगण, मैं आसाम वासियों का ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, हम जब आसाम में GST का रिजोल्यूशन देश का सबसे पहले पारित किया था, मैं आज भी मेरा याद है, आपने हम लोगों को बोला था कि A फॉर असम। आज यही आपका जो वाक्य था, इसको ही आज हमने साकार होते देख रहा हूं। आसाम को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेके भारतवासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर था। लोग जब कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते थे देश में, लोग कभी उत्तर पूर्व को कंसीडर ही नहीं करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ करना संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका निरंतर उत्तर पूर्व का भ्रमण, आपका असम वासियों और उत्तर पूर्व के लिए आपका अगाध प्रेम का कारण आज भारत का सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन का पहला दिन ही असम को शामिल होने का सौभाग्य मिला है। असम वासी और उत्तर पूर्व आपको हमेशा याद करेगा। एक देश का जो एक नेग्लेक्टेड रीजन था, एक नेग्लेक्टेड रीजन को आपने टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का पहला चरण में लेके आया। ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव का बात है।
मैं पूरा आसाम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मन में कोई भाषा नहीं है, मेरा खाली आज मैं इतना ही बोल सकता हूं। मैं आसाम में ही जन्म लिया हूं, कभी मैं सोचा भी नहीं कि आसाम विल बी द अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन। ये काम आपका नेतृत्व में संभव हुआ। आसाम वासी आपको कभी नहीं भूलेगा। आसाम का इतिहास में और आसाम का आने वाला पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगा, आपका प्रेम का कारण, आपका महानता का कारण। और हमें भी, हम यही आपको आश्वासन देता हूं कि आसाम, जो आपने आसाम का ऊपर ट्रस्ट रिपोर्ट किया है, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया है, उसका जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट में हम खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अश्विनी वैष्णव जी ने हमें मार्गदर्शन किया, कैसे शुरू करना है, कहां से क्या लाना है, सारे हमें पूरा ये समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टाटा सन्स का साथ आसाम का बहुत बड़ा संबंध है। ये आज से ये संबंध नहीं है, ये बहुत दिन पहले से ही हमारा ये संबंध है। और टाटा ने ही ये हिम्मत किया ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ने के लिए। मैं चंद्रशेखरन जी और तमाम टाटा ग्रुप को धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप एकदम बहुत बढ़िया आसाम में इकोसिस्टम मिलेगा। और आपको कभी, आपने जो ये सिद्धांत लिया, इसका कारण आप कभी रिग्रेट नहीं करेगा। आपको खुशी होगा, आपको अच्छा लगेगा कि यू हैव चूजन ए करेक्ट डेस्टिनेशन and choosing Northeast, you have contributed immensely for the development of this great region and great nation. प्रधानमंत्री जी, हमारा सामने लाखों लोग मौजूद हैं, सब आपको दोबारा अभिवादन करते हैं। और आसाम का इतिहास हमेशा एक आपको युग पुरुष का नाते आपको हमेशा याद करेगा। मेरा कोई भाषा नहीं है, मैं खाली आपको धन्यवाद देता हूं दिल से, आसाम वासियों का दिल से। भगवान आपको लंबे आयु दे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, आपका मार्गदर्शन में, आपका हाथ में ही भारत मां विश्व गुरु बने, यही मेरा कामना है, यही हम लोग का आशा है। और हमेशा आप ऐसे ही उत्तर पूर्व को आशीर्वाद देते रहे, आसाम को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस शुभ बेला के उत्साह की तरंगे चहु और आभास की जा सकती है। और पूरे देश को इस गौरव की अनुभूति देने हेतु एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना करबद्ध रूप में प्रणाम करना चाहूंगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। विकास की इस अविरल बेला में गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब विद 50,000 WSPM कैपेसिटी एवं सानंद में सेमीकंडक्टर APMP यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड चिप्स का शिलान्यास अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। तो गुजरात की ये धरती इस आरंभवर्ती क्षण को किस प्रकार संजोए है, आइए जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के शब्दों में। माननीय, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके उपस्थित गणों को संबोधित करें। श्री भूपेंद्र भाई पटेल। भारत के सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के भूमि पूजन समारोह में हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से उपस्थित वैश्विक नेता, विकास पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आसाम के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे साथ मंच पर भी उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, डॉ. महेंद्र भाई मुजपरा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी,
सीजी पावर के चेयरमैन श्री वेलिया सुबैया जी, सीईओ श्री डॉक्टर रणधीर ठाकुर, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी साथी मंत्रीगण, सभी धारा सभ्य श्री और वाला प्यारे स्टूडेंट, इंडिया टेकेड चीफ फॉर विकसित भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी गुजरात को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की विजनरी लीडरशिप में भारतीय उद्योग हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम मुश्किल लगा करते थे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि समस्या और संभावना में सिर्फ सोच का ही फर्क है और समस्या को संभावनाओं में बदलना ही मोदी जी की गारंटी है। भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक ऐसे कई सेक्टर्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो गए हैं। इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मूल में सेमीकंडक्टर चिप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है और विश्व को रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात को भारत का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का जो विजन दिया है उसे साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है। गुजरात के पास प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उतारने की अपार क्षमता है। सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गुजरात देश का पहला राज्य है जिसे डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी की खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अपने आप ही गुजरात में अप्रूवल मिल जाती है। धौलेरा में विकसित हो रहा सेमीकॉन सिटी भी भारत में एकमात्र डेस्टिनेशन है जहां सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी सभी जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। विश्व की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गुजरात की इन्हीं फैसिलिटीज के आकर्षित भी हो रहे हैं। माइक्रोन कंपनी के बाद गुजरात में सेमीकंडक्टर से जुड़े 2 प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। ये हम सभी के लिए गौरव के क्षण है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिलने वाली सभी निवेश अवसरों का लाभ लेने के लिए हमने एक नोडल एजेंसी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन को ऑपरेशनल किया है। आज धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और सानंद जीआईडीसी में सीजी पावर अपने यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में श्री एन चंद्रशेखर जी ने घोषणा की थी कि टाटा ग्रुप धौलेरा में एक विशाल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित करेगा और ठीक 2 महीने के बाद हम सभी इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। इतने ही कम समय में इस यूनिट की स्थापना का काम शुरू हो जाना यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की उपलब्धि का जीता जागता उदाहरण है। इन दोनों यूनिट्स की स्थापना से लगभग 50,000 से अधिक रोजगारी के अवसर खुलेंगे। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले इस सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग न केवल भारत में मौजूद इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, ऑटोमेटिव, डिस्प्ले और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में होगा, बल्कि साथ ही
ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हम हिस्सा बनेंगे। ये यूनिट्स हमारे देश में चिप फैब्रिकेशन में अपनी क्षमता को विकसित करेंगे और भारत को विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन में शामिल भी करेंगे। धौलेरा में उपलब्ध ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अहमदाबाद और धौलेरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे, रीजनल रेल और धौलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर से पूरे इकोसिस्टम को जरूरी लॉजिस्टिक उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इनके इस विचार को वास्तविक रूप देने के दिशा में भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा और गुजरात इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर स्टेट बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद महोदय। भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति देने हेतु अब समय है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के कस्तूरी करों द्वारा तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज के शिलान्यास का। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप कृपा करके रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। धौलेरा गुजरात की TEPL फैब फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और अब हो रहा है मोरेगांव असम की TEPL OSET फैसिलिटी का शिलान्यास। आरंभ के इस चंदन पर संपूर्ण राष्ट्र की शुभेच्छा। और अब सानंद गुजरात के CG पावर OSET फैसिलिटी के शिलान्यास के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इति शुभम। अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं पर बनी लघु चलचित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारतीय सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है। अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धौलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट
असम के मोरीगांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। वाकई आज के इस अभूतपूर्व शिलान्यास में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूरब और पश्चिम छोर को मिलाकर आज एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जिस पर विकसित भारत पल्लवित होगा। और इस उपवन के उद्यानपाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के स्वागत का जय घोष करते हुए मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलैन सुभैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमी कंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, एक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का ये कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए
ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। मैं इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शामिल प्रत्येक छात्र का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलियंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही
एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम्स को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है।
इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही हैं, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था। लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ति की कमी, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए दूरगामी फैसले लेने की क्षमता की कमी। इस वजह से वर्षों तक भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया। उन दशकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोचते थे कि अरे जल्दी क्या है, समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समाधान अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे,
लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने 2 दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। 2 दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए। गगनयान को लेकर भी भारत की तैयारी और तेजी आई है। हाल में ही देश ने को अपना पहला मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर मिला है। ये सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे हैं, तेज गति से ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के इन 3 प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और साथियों, आप जानते हैं आज चारों तरफ एआई की भी उतनी ही चर्चा है। भारत की टैलेंट आज एआई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सप्ताह से मेरे जितने भी भाषण होते हैं, कुछ युवा नौजवान मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब हम आपकी एक एक बात हर भाषा में गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने एआई टूल का उपयोग किया और आज मेरा हर भाषण आप अपनी अपनी भाषा में कुछ ही समय के बाद सुनना शुरू कर दोगे। यानी किसी को तमिल सुनना है, किसी को पंजाबी सुनना है, किसी को बंगाली सुनना है, किसी को असमिया, उड़िया, जो भी सुनना है। ये एआई का कमाल ये मेरे देश के नौजवान कर रहे हैं और मैं तो ऐसी नौजवान टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया एआई के जनरेटेड मेरी स्पीचेस को, मेरे भाषणों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मेरे लिए बड़ा आनंद का, खुशी का विषय बना है। और देखते ही देखते सभी लैंग्वेज में भी हमारी बात एआई के माध्यम से पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नौजवानों का जो सामर्थ्य है, उनको अवसर चाहिए। और ये सेमीकंडक्टर का हमारा इनिशिएटिव देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं
कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया से के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭകർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. നിങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടാൻ അവസരം. നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്ലോഗ്, 1 മണിക്കൂർ തത്സമയ ജീവകാരുണ്യ വാർത്താ പരമ്പരയിൽ അതിഥി, ഒപ്പം ഒരു നിർധന രോഗിയുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായ പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അവസരം. കൂടാതെ ഒരാഴ്ച സൗജന്യ വാണിജ്യ പരസ്യ സംപ്രേഷണവും. ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ വിത്ത് യു. न्याय शब्द जोड़ दिया. आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलता है? नहीं मिलता. पिछड़ों की आबादी जानते हो आप लोग? देश में पिछड़े कितने हैं? कोई जानता है? 85 तो नहीं है. कोई 23 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, 100% कोई कह रहा है. मगर सच्चाई यह है कि आपको नहीं मालूम. पिछड़े कितने हैं नहीं मालूम, दलित कितने हैं नहीं मालूम, आदिवासी कितने हैं नहीं मालूम, जनरल कास्ट के कितने नहीं मालूम, माइनॉरिटी कितने नहीं मालूम. बात भागीदारी की होती है. सब लोग कहते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए, मगर अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन कितने हैं तो भागीदारी कैसे होगी? सवाल ही नहीं उठता. 50% पिछड़े हैं तकरीबन, कहा जाता है, कोई जानता नहीं है, मगर तकरीबन 50% पिछड़े हैं. तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 15% माइनॉरिटी है. कितना बनता है? 50, 15 और 15, 30, 80 हो गए. 8 कितने हुए? तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या आदिवासी है, या दलित है, या पिछड़ा है, या माइनॉरिटी है. और उसमें आप 5% जनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो, 95% मान लो. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो मीडिया वाले हैं, इनमें 90% के कितने? मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो. मैंने निकाली है. उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा. 90% का आपको वहां कोई नहीं मिलने वाला. कभी आपने मीडिया को किसानों के बारे में बोलते हुए देखा है? क्यों नहीं? किसान की नहीं बोलते, गरीबों की नहीं बोलते, मजदूरों की नहीं बोलते, महंगाई की नहीं बोलते. जब बीजेपी एमएलए खरीदती है तब नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते? गोदी मीडिया नहीं, ये आपके हैं ही नहीं. ये 90% के हैं ही नहीं, ये 5% के हैं.
मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रिपोर्टर हैं, इनको तो मतलब सैलरी से बांध के रखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं इनके मालिकों की बात कर रहा हूं, इनके मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अब देश में जो मुद्दे हैं, मैं 4000 किलोमीटर चला हूं, मैं आपको बता सकता हूं देश में 3 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। ये 3 मुद्दे हैं। लाखों लोगों से मैं मिला, सबने यही कहा। किसान कहता है आलू का चिप्स का पैकेट, उसमें आधा आलू होता है, वो 10 रुपए का बिकता है। उस आलू के चिप्स के पैकेट में हमें 10 पैसा मिलता है। युवा कहता है भाई बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल सकता। हर युवा कहता है लाखों रुपए हमें प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में देने पड़ते हैं। कभी आपने मीडिया को यह बात बोलते हुए सुना? नहीं। देखिए, बिका अलग बात है, बिका अलग बात है, वो आपका है ही नहीं। बिकता तो तब ना जब एक बार वो आपका होता, मगर वो आपका है ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकता। वो 24 घंटा मोदी की प्रशंसा करेगा, 24 घंटा। विपक्ष का आपको उस पर कोई नहीं दिख सकता, ठीक है? तो आपकी मीडिया में भागीदारी नहीं है। अब मुझे बताइए, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी। उसमें मुझे बता दो उन मालिकों की लिस्ट में पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? 90% में से आपको वहां एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आपको कोई गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, कोई पिछड़ा नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 3-4 पर अभी कहूंगा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पे 3-4% के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। मीडिया का सिस्टम उनका, कॉर्पोरेट सिस्टम, कंपनियों का सिस्टम उनका, सरकार का सिस्टम भी उनका। नहीं, अभी मुझे बोलने दे भाई बाद में बोल। तो वो भी आ रहा हूं, आपका ही प्रयोग करके ये समझाऊंगा। आप इधर आ जाओ, पहले साइड में आ जाओ। नाम क्या आपका? संतोष पाटिल। अभी 2 मिनट ठहर जाइए, आप 2 मिनट ठहर जाइए, मैं ईडी आपको समझाऊंगा अभी। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं दिल्ली की सरकार को? आईएएस अफसर चलाते हैं, 90 हैं। वो हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं। इस सड़क के लिए कितना पैसा गया, उन्होंने निर्णय लिया। हाईवे कहां बनेगी, वो डिसाइड करते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, वो डिसाइड करते हैं। 90 में से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ? 90 में से 3 पिछड़े, आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। 15% दलितों की, आदिवासी दलितों की आबादी, 90 में से 3 उनके। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका। और अगर बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये सारे के सारे मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़े सारे मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। बजट का 6 रुपए संभालते हैं। आबादी 90%, बजट की हिस्सेदारी 6%। आदिवासियों को 10 पैसा मिलता है 100 रुपए में से, दलितों को 1 रुपया मिलता है 100 रुपए में से,
वो ही 2-3-4% लोग, उनके बीच में सब चल रहा है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आपका नाम क्या है? राजू जी, ये शर्ट आपने खरीदी, कितने की खरीदी? 1000 की खरीदी। ये अगर अदानी शर्ट खरीदता तो कितनी जीएसटी देता? जितनी आपने दी उतनी देता ना। आपने 18% दी, आपको पता भी नहीं लगा, उसमें चला गया, मतलब आपके जेब में से निकाल दिया, आपको पता भी नहीं लगा। 18% आप दोगे, 18% अदानी देगा। आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। उसकी कितनी है? करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ रुपए। मगर जीएसटी वो इतनी देगा जितनी ये देंगे। सड़क ले जाएगा आपकी, एयरपोर्ट ले जाएगा, पोर्ट ले जाएगा, किसानों का अनाज ले जाएगा, स्टोरेज की फैसिलिटी ले जाएगा, सब उठा के ले जाएगा, ट्रेन ले जाएगा, रेलवे ले जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब उठा के ले जाएगा। पैसा किसका? आपका। और आप देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। आ जाओ ऊपर, मैं दिखाता हूं आपको। आ जाओ, यहां आ जाओ। अब इन्होंने आ जाओ, जो ऊपर खड़े हो जाओ। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं हिंदुस्तान की सरकार। हाँ, खड़े हो जाए। क्या पूरा नाम क्या आपका? यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। पूरा नाम क्या आपका? हाँ, संतोष यशवंत पाटिल। संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई? आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जरा खड़ा होइए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान उधर उधर करो, ठीक है? अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया, मोदी समुद्र के नीचे है भैया। वो उधर देखो भैया, उधर देखो, वो देखो मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है भैया। उधर देखो भैया, वो देखो पाकिस्तान की ओर देखो। अच्छा भैया, यहां देखो चाइना की ओर देखो। तो इसका ध्यान पहले इधर उधर करेंगे। कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। उसके बाद पीछे से अदानी आएगा, जेब काटेगा। अच्छा, ये मुझे देना, डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। ये वाला दे दो, छोटा वाला दे दो। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो मोदी ध्यान इधर उधर करेगा, राइट? अदानी पीछे से जेब काटेगा और अमित शाह यूं डंडा पकड़ के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके मारेगा। किसको मारेगा? इसी को मारेगा। अगर इसने चू किया, उसको मारेगा। तो यही हो रहा है। आपका जीएसटी का पैसा है, आपकी भागीदारी कहीं नहीं है। आप कुछ कहो तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लग जाता है, पिटाई हो जाती है, पुलिस वाले मार देते हैं। और मजा किसको आ रहा है? अदानी अंबानी। ये मोबाइल फोन पे कितने घंटे रहते हो आप? कितने घंटे चलाते हो इसको? ये जो व्हाट्सएप देखते हो, ये रील देखते रहते हो, कितने घंटे चलाते हो? 5 घंटे। आपका टाइम, नाम क्या तुम्हारा? जादव, गौरव, आप कितना समय देते हो मोबाइल पे? सच बोलो। 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे आप रील देखते हो, अपने दोस्तों को भेजते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, है ना? यह ध्यान भटकाना तो हुआ। आपको रोजगार नहीं देते, महंगाई बढ़ती जाती है और आप रील देखते हो। जब आप रील देखते हो, पैसा किसके जेब में जाता है? उन्हीं के जेब में जाता है।
जियो 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 और आप लोग मरो, जियो और आप लोग मरो। यही है। तो इसीलिए सबसे पहला ऐतिहासिक कदम, चोट लगती है किसी को, चोट लगती है तो डॉक्टर पहले क्या करता है? एक्सरे कराता है ना, कहता है भैया देखो आपका हाथ टूटा है, इधर आओ एक्सरे कराओ। तो मैं वही कह रहा हूं, ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना देश का एक्सरे, और जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे, और पुराना सर्वे जैसा नहीं, मैं करवाऊंगा और मैं बताता हूं कैसे कराऊंगा। सबसे पहले सबको पता लग जाएगा किसकी गिनती कितनी है। दलितों को पता लग जाएगा, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सबको पता लग जाएगा। ठीक है। दूसरा कदम, जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, अगला स्टेप होगा ये धन किसके हाथ में है? क्या पिछड़ों के हाथ में है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, दलितों के हाथ में है, आदिवासियों के हाथ में है, या 2% लोगों के हाथ में? 2%। उसके बाद हिंदुस्तान की हर संस्था, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब में पता लगाएंगे भैया इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। सही बात है। और फिर सवाल यह पूछेंगे कि अगर 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों का माफ कर सकता है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? मतलब पता नहीं, आपको मालूम नहीं मालूम, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। बात समझ आई? एक तरफ 22 लोगों को खड़ा कर दीजिए, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोगों को खड़ा कर दीजिए, सेम धन है। 50% हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के पास हिंदुस्तान का पता है कितना धन है? बता दो, मान जाऊंगा। बता दो। 50% आबादी निकालो हिंदुस्तान की, 3%। 50% 50% सबसे गरीब लोगों के पास हिंदुस्तान का 3% धन है, और 22 लोगों के पास 50% से ज्यादा धन है। तो यह मजाक बना रखा है। आप लोग सवाल नहीं पूछते, आप लोग अपना ध्यान इधर उधर करते रहते हो। जैसे अभी ये सेलफोन पे आपने वीडियो लिया, फिर इसको आप फिराओगे, भैया ये लो देखो मैंने वीडियो देखा, वो जाएगा आपके मोबाइल फोन से, जाएगा किसी और के मोबाइल फोन में, जाएगा, उसका ध्यान भटकेगा और सीधा पैसा 22 लोगों के पास, 22 लोगों के पास। तो ये जाति जनगणना है, इकोनॉमिक सर्वे, इससे सारा साफ हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा, लिख के आपको पता लग जाएगा कि अग्निवीर क्यों हुआ। आप जानते हो अग्निवीर क्यों हुआ? जानते हो? नहीं जानते। आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं? हाँ, महाराष्ट्र के जो चीफ थे, उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। आप बात समझो, महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया, आर्मी चीफ को नहीं पता था। अब हिटलर शाही क्यों, मैं बताता हूं आपको।
पहले एक तरीके का शहीद होता था। अगर हिंदुस्तानी सैनिक शहीद होता था, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसको आदर मिलता था, उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, और हिंदुस्तान की सेना उसके परिवार की रक्षा करती थी, शहीद का दर्जा देती थी। अब दो तरीके के शहीद नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं। एक साइड पे वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, परिवार को पेंशन मिलेगी, उसकी रक्षा होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा रखा जाएगा, और एक दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वो है अग्निवीर। चाइना के जो सैनिक हैं उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, और इनको 6 महीने की दी, और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या? अब यह अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधा अदानी डिफेंस को जाए, कि अदानी हथियार खरीदे। अदानी क्या करेगा? अदानी पार्टनरशिप करेगा अमेरिका की कंपनी से, इजराइल की कंपनी से। हथियार बनाएगा इजराइल, डिजाइन करेगा इजराइल, अदानी यहां हिंदुस्तान की सेना को बेचेगा। पहले एचएल बेचता था, एचएल बनाता था, बीएचईएल बनाता था, अब अदानी बनाएगा। जवान जाएगा बिना ट्रेनिंग के हथियार के साथ, शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया तुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तू अग्निवीर है। और जो ट्रेनिंग में पैसा जाना था, जो पेंशन में पैसा जाना था, जो सैनिकों की रक्षा में पैसा जाना था, वो सीधा अदानी की जेब में जाएगा। तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को उड़ा दिया इन्होंने। आप देखो इन्होंने क्या किया। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है, ये नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये नहीं चाहते कि इनको इस देश में भागीदारी मिले। अग्निवीर होगा, मुझे बताओ, अग्निवीर होगा, 4 लोग जाएंगे ना आर्मी में, 3 को निकालेंगे ना। कौन से 3 निकलेंगे? गरीब जनरल कास्ट का निकलेगा, गरीब पिछड़े। ठहर जाओ। अग्निवीर जो 3 बनेंगे, देखो 4 लोग आर्मी में जाएंगे। ठहर जाओ भैया, बोलने दो ना। 4 लोग आर्मी में जाएंगे। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए। 4 लोग जाएंगे आर्मी में, राइट? 3 लोगों को हटा दिया जाएगा। कौन हटेंगे? पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये हटेंगे। और वही जो 3-4-5% लोग हैं, अमीर लोग, उनके बच्चों को सीधा वहां पे अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये हो रहा है आपके साथ। और ये पूरा का पूरा आपके प्रधानमंत्री जी, उनके 2-3 अरबपति मित्र और हिंदुस्तान के 3-4% लोग करवा रहे हैं। आपके पास 90% लोग हैं, मगर आप सब बटे हुए हो। कोई मोबाइल फोन देख रहा है,
आपको लगता है कि ईवीएम है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। पहले भैया आपके 90% के पहले 2-3 रास्ते थे। एक पब्लिक सेक्टर था, उसमें आप लोगों को रोजगार मिल सकता था। एक सेना थी, उसमें रोजगार मिल सकता था। वो सब खत्म कर दिया है। आपका एक ही रास्ता बचा है, मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यही काम बचा है आपका। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये सारा का सारा ये मीडिया वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी और 2-3 अरबपति मिलकर कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द इसमें जोड़ दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। नमस्कार। ये राह भले हो लंबी, ये राह भले तू भर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम 3 रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। सब अंधेरे धुल जाएंगे जब पाएंगे न्याय, हम 3 रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। न्याय जो मजदूर किसानों की मेहनत में रंग लाए, हर औरत के साथ चले, हर एक युवा के संग आए। न्याय जो भागीदारी का हर एक को अपनाए, 5 न्याय का परचम। This contention assumes that notwithstanding the declaration in 2, the states still retain the power to levy taxes upon minerals over and above those prescribed by the MMDR, and that a fresh declaration is called for whenever such subsisting power is sought to be further encroached upon. That was the original argument. Each time you must have a fresh declaration. Then 313, page 313, the denudation is not partial, it is total. They cannot levy any tax or cess on minerals so long as the declaration in section, there's a misprint there, 2 stands, 2 is missing. Once the denudation is total, there is no occasion or necessity for any further declaration, or for that matter for repeated declaration or denudation. Now, Malas, let me make the submission after I finish. Come to para 17. Even assuming without conceding that the declaration in 2 does not ipso facto oust the state's legislative competence, I'm arguing the alternative, expressly contemplates the levy of taxes thereunder as evident from section 25, and the fact that it levies a royalty, which is a special kind of tax, under 9 and a dead rent under 9A, denudes the states. Conclusion in 18 is very important. Conclusion. Thus, even assuming entry 50 is to be read restrictively so as to require an inquiry as to whether any specific provision imposes a tax, 9.1 imposes tax, directly covers the field. 9A imposes dead rent, directly covers. 9B imposes a cess to be employed for upliftment of the district affected. On the next page,
And your lordship will just allow me, this Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana, which is at page 47, is very useful. It will repay study. I don't have the time to show it. Please make a note and please see it, at your lordships. The center covers the entire gamut and tells you how to use the money till the last user. This Pradhan Mantri Yojana, is page 57, is very comprehensive. And it is issued under section 20 capital A of the Act. So here one sentence. This extent will not have any problem here because coverage is complete. The coverage cannot mean multiple piecemeal legislations. I gave the example of the coat and the gown and the band yesterday. You cannot have multiple legislations that because I covered the coat and the gown, tomorrow somebody can do on shoes. That its intention is to leave that to the center and not tax it. There is an implied prohibition there clearly. Then para 19. Now just see, Odisha Cement says, all these are ignored, I mean, not ignored, they're just brushed aside, cited and brushed aside. The object of 9 cannot be ignored. 25 implicitly authorizes the levy of rent, royalty, taxes and fees, directly the issue. But if your lordship total the number of judges who are spread over India Cement, Odisha, synthetics is coming, all judges have the same view. I mean, your lordship is of course plenary. But why should your lordship give so much weight to Kesharan? This is the only dissonant judgment. Now see the next one. Synthetics is very interesting. My lord is hearing synthetics on the other point of entry 3 list, entry 33 list 3. This is a different point, very interesting. 7 judges are held so. 9 or 7? 7. Now see Malanadu. So Odisha I have done in 19. Now see 20. 20 is Malanadu. A perusal of the MMDR, all the sections are given, will clearly point out that taxation on mineral and mineral rights, any tax, royalty, fee or rent are provided in the said act. The state legislature is denuded or deprived of the power to enact. Then 21. These are calculations I've given. Your lordship may just keep it in mind. I will save time by not reading it. I'm only adding to Mr. Tushar Mehta as well as impassioned plea about various monies where they go. The last part of para 21 is very interesting. He's given you the details. I don't have to go. That's the government's job. But just see, all these total to about 16 to 21% of the average sale price. Last line, above para C. Above para C, my lord has got. All my lords have got the line above C. Total of all these levies, which is 9, 9A, 9B, 9C. Of this 21 or 16%, 0.3% is retained by the center. The previous line above that. That is 2% of royalty, NMET. That is 0.3%. All the rest goes back. C, next para C, at page 315. Most significantly, all these levies, except NMET, that is 0.3, admittedly go to the state government coffers. Then state-wise breakup is given. Mr. Mehta has dealt with it. I'm not going to deal with it. 2 more para that I'm done with this part. 23 at page 316. Now, it is true that the general standard Sundarama Iyer concept of grouping is there. Before I read it, my answer is simple. That is not a mechanical sorting machine. Where this article leads you, lordship, to think differently, that is 50 special unique architecture, then that grouping is not cast in stone. That's my submission in 2 paras. Sundarama Iyer is valid, but it says itself is not exhaustive. Sundarama Iyer, that judgment which says grouping, says itself that don't treat it as exhaustive. There may be entries like 50 which don't allow grouping because they're uniquely worded. My Lord if I may say, called it 8 mantras. Honorable Chief Justice 2 days ago. I've dealt with that. Kindly come to 823. You have to therefore not be a slotting machine. You have to go entry wise. Mostly Sundarama may apply. Sometimes will not apply. Your lordship's analysis or interpretation can't be straight-jacketed by a Sundaramaya focus that no, I have to group. This is a unique architecture. This one is not a grouping architecture. It is 54, 97, 50. It's a totally different triangle. Now come to 23. For these reasons, 50 and 54 read with 97 imply a sui generis and complete code on regulation of mines and mineral development and taxation of minerals and mineral rights, as the state's power of taxation in entry 50 as well as general powers are both subject. Both is italicized.
Then let's come to 24. 26. I'll skip 24 to save time. Come to 26 straight away. This is, the word mantra is replaced by the word sutra here. The Roy's case from Assam acknowledged that the scheme of the 7th schedule cannot be governed by a straitjacket. Our endeavor, because he goes against the Guire principle. The Guire principle is grouping. So he says, no, it can't be a straitjacket every time. Our endeavor is only to demonstrate a great deal of examination, etc. No rule which has a universal application with regard to the interpretation of all entries can be postulated. That's my point. That's my respectful submission. The statement of Justice Guire, Chief Justice Guire, that a broad and liberal spirit should inspire and the legislative entries should not be read in narrow, cannot be understood as a sutra valid for all times and in all circumstances. That's the only point I want to say, Malas. And Malas, para 26, next page 318, I have mentioned the 8 mantras, 8 formulations which the Honorable Chief Justice had done. I am, Malas, now coming to 27, which is a little noticed, but an extremely important paragraph, 827. 7 judges in Malas synthetics, not on the point your Lordship is considering next week, say the power to levy taxes is to be read from the entry relating to taxes and not from the general entry. Exception in entry 50 of list 2 where tax on mineral rights is subject to any limitation imposed by Parliament relating to mineral development. And this power of Parliament is in general entry. There can be no more direct than this, Malas. Now, you may say, Malas, that 9 judges is wrong or right, but certainly, Malas, Kesharam, with greatest respect, had no business to, Malas, brush it aside. Malas? The power to impose a limitation has to be read under entry 54. That doesn't mean the power to impose a tax is to be read under 54, read with entry 97. 2 answers, Malas. It means a tax because of the language of 50. That's the opening word of 50. 50 cannot contemplate a limitation which cannot be a tax limitation. Answer number 1. Answer number 2. 7 judges have said exactly what I've said just now. No, it's a limitation on the power to impose tax. No, tax it says. Synthetic says tax. Yes, the limitation on the power to impose tax means the power resides with the state. The limitation emanates from entry 54. Yes. Correct. Therefore, the power resides in the center also. The center cannot impose without all power. The power has to be in the center. And a superior power is the center. I'm trying to say is the power to impose a limitation doesn't take within itself the power to impose a tax. With respect, let me examine. That's a new nuance, my lord. Give me 2 minutes. How do you limit a tax without reducing or imposing? Suppose the state imposes 1%. I want to limit it, I say abolish it. Your Lordship has to assume that I have the power. If the center has no power, the matter ends. Your Lordship will not be able to control it. Limitation has to include from 0 to 100. Can say we are abolishing the power of the states to levy the tax, but we are going to levy the tax. That's not the scheme of the Constitution. No, by 97, they will have the power. If your Lordship resides the power, it has to have the power. With respect, with respect, that will be an artificial limitation. No, let me just explain. Very clearly, let me explain this. It is very clearly divided, Dr. Singhvi. Yes. The state is given the power to levy the tax. Subject to limitations. Subject to limitation, we understand that. And we go into the limitation of 54. But you are trying to bring in 97 as also a power to levy tax. How can the residuary entry be utilized for this purpose? Can I? First question to be decided is, does the center have the power or not? Matter ends if your Lordship finds they have no power on taxation. That's the primary question. All this debate is if they have some power of taxation. My answer is they have to have a power of taxation because the limitation envisaged and recognized by 50 itself is a limitation on taxation. 50 itself recognizes that you, my superior, has the power. We stop here, Manas? Unless we accept the fact that 50 dealing with taxes, using the word limitation, recognizes a superior person, then we can't go further. Now we come to a different nuance, which my Lord Justice Nagarata has asked.
Yes, taxation is also within 54 because the look back by 50. Is in entry 50 list 2. The power to impose a limitation on Quay taxation. 54. Right, let's accept that. The power to impose a limitation, quay taxes. We are only concerned with that, right, Police? Now, my two submissions there are, if your lordship concede, this is only a debate, lordship doesn't have to concede or accept, your lordship decide. But if your lordship accepts a power that taxes can be limited by the central government under 54, then two facets. One, the word limited by central government has to include the plenary power from 0 to 100 is the first submission. It's not that your lordship gives him some power and not gives him some power. He either has the power or doesn't have the power. On taxes, and I say he has to have the power on taxes because 50 looks back. Now the second facet. Once he has the power, I am only using to limitation. Yes. Right. But limitations quite taxes because the entry is on taxes. It does not transfer. The limitations do not transfer the entire field of taxes on mineral rights to Parliament under entry under list 1. No, if Parliament chooses not to do so, yes. But it's kindly go to 50. Because Let's go to you know the danger. Yes. Look at the grave danger to the Indian federal structure by accepting your argument. No, Parliament can decide not to. Suppose Parliament prevents. Suppose the limitation assumes the character of a prohibition. Because there are judgments that say a limitation can amount to a prohibition. Then, on the one hand, Parliament can prohibit the states, but it can say, I have prohibited the states, so now the entire field is left to me. There's a little difference. Under list 1. Point number 2, Parliament imposes limitations. It can say, I have limited the states, but I am unlimited. I can impose a tax minus those limitations. Can I answer? That was never the. Can I answer that this? was never the intent. Can I answer that? And appropriate what the Chief Justice was saying, you see, merely because bulk of the revenue collected goes back to the state would not meet the argument that That's the a Chief Justice constitutional argument. This is a factual argument. There are two different things. I'm not. One is your lordship first has to locate the power. This is not a question of fact whether I give you back or not. That's not. I'm not arguing that. The limitation in on mineral development. No, therefore, now let's just look at 50 for a minute. Just look at 50. I know this is too late in the day to look at 50, but let me give you lordship 1 minute. Taxes. Next, yes, very well. Very now. well. Only one sentence and I'm done. I've made my submissions here. Lordship may or may not. I'll go to the next point. I only want to say one thing. Argument of looking back, Dr. Singhvi. Yes. It might be seen by the states as looking back with anger, you know. Super hit it was, Willis. One sentence and I'm done. I'm going to the next point. By Uza from India. I'm coming to my next proposition with one sentence in the last one. There are therefore in summary 5 judgments. What should be note on the side is not in my note. 3 of them locate this point in 54, read with 97. I'm summarizing now. Those 3 are Mahalakshmi, Saurashtra, and Justice Sinha dissent in Kesharam. Just one. There are 5 judgments. 3 locate the power of Parliament to levy a tax. Yes. Under 54, read with 97. And you have given those as Mahalakshmi. First is Mahalakshmi, then is Saurashtra. Then Sinha's dissent in. And the 4th is important, Odisha, which is quoted in my page 311. I'm saving time, is a very useful quotation. 4 judgments.
Odisha, not Odisha. I'm sorry. That fourth one is, I'm sorry, that's an error. Justice Oza in India Cement, I meant, not Odisha. Justice Oza in India Cement. Not Kesaram. Not Odisha. No. Justice Oza in India Cement. And Justice Oza, because he was a concurrence in India Cement. Yes, we saw that, I remember. And there is one more judgment which does the same conclusion without 97. Without 97, which is Malanadu plus synthetics. Two judgments. Malanadu and synthetics. They're all quoted. So my lord has 6 judgments in all, 4 which do conjointly 54 and 97, and 2 which rely on 54, but the same conclusion, taxation. My question remains the same to myself, Balas. Why should Kesharam be preferred? Finding out. Interested. 10 minutes more. This is an important proposition for your lordships to lay down guidelines. It is dealt with from 319 to 322. 3 pages only. Let me make the point, then your lordship doesn't have to spend time on it. I only want to ask your lordships, again without prejudice, 3 pages, 319 to 322, that your lordship should make it clear what is the tax on minerals versus what is the tax on mineral rights. My first principal points are twofold, then I'll just read 1 or 2 paras. 50 is advisedly using unique words. I always call it a non-vanilla entry, because no other article in minerals, in Vala's entries, has used tax on mineral rights. 53 and 54 use mineral development. 23 uses regulation of mines and mineral development. 54 uses identical language. Now, Malas, my point is that your lordship should give some weight to that different language used. And one more sentence, factually and contextually. Malas, there's a fundamental difference. One is you tax my extraction from the bowels of the earth. So 10 tons, ad valorem fee, 5%. Whatever the value, sale value, you tax. 100, more tax. It's a fixed ad. So tax on minerals? Yes. It's very easily understood. Tax on minerals. And in contrast, I give him a lease for 20 years. I give him a lease for 50 years. And I give him a 100-year lease. Or I give Malas different forms of licenses. I don't know all forms your lordship has of them. Along with size. You can tax that, but that's a different taxable event. The nature of the tax is different. I'm not saying you can't tax this. In this argument, I'm conceding. Without prejudice argument, naturally, without prejudice argument, I'm assuming that you can tax, but you please tax mineral right. That is the duration and the size which you have to extract minerals, not the actual mineral extraction. The grant can be taxed. This has been held, Balas, incidentally, again, these are all Balas upset because of Kesharam. This has been directly held by 3 persons at least, Balas. The same Justice Oza concurring in India Cement. It's all quoted in my note in these pages. Justice Sinha in Kesharam and Justice Vanchu in Balas in great detail in Hinge. That's the most detailed. I'm going to save time by not reading it. I would request my lord, those paras repay study. My respectful submission is, what is so conceptually wrong that your lordship should incline to the Kesharam view? Kesharam has cited them all and said, because India Cement had a typo and an error, therefore all these judgments are wrong. But royalty is on the mineral removed or consumed. Exactly. It is on the product. Exactly. That's my point. But a tax on mineral right is under entry 50. Correct. So your lordship please lays down. Say that royalty is not a tax on mineral right, but a tax on the mineral removed or consumed. Agreed. Then there is no dichotomy at all. That's all I'm asking for. With the deepest respect, that's my formulation. But I can't say it, your lordship has to say it. So you are saying that if the states impose a tax under entry 50,
you can tax the grant, but not the extraction of the material. That's your contention. This is a more pithy formulation. Tax on minerals extracted, dispatched or removed are not part of 53. Not part of 50. And 50, as my Lord puts in a different form, I didn't but use it the can be used as a measure. You can't. A measure can't change the taxable event. A measure can't change the taxable event. Taxable event is your right to extract. Which is not the mineral extracted. But the state legislature may say, okay, I will impose a tax which will be a certain component of royalty. Whereas once your lordships... Your right to extract is not really something in the abstract. Your right to extract has meaning because of the commercial exploitation of the right. So the legislature may choose a number of formulations because a number of formulations are open to the legislature. It may say, all right, we will tax at the rate depending on the number of years of the lease or the quantum of the area or the size of the grant. Or we can also tax on the basis of the actual extraction as a measure of the tax. Can I just... Because that's the commercial use to which you are putting that grant. No, my Lord is simply putting that the measure... Tax on mineral rights should have no connection at all. No. To the exploitation of the mineral rights. Maybe a little too far-fetched. Well, it's a legislative issue. Then your lordship would be... Then your lordship would be allowing a camouflage. It's a field. No, may I answer that? Your lordship would then be allowing... And it's not this, that a tax on minerals is given to Parliament and a tax on mineral rights is given to the state legislatures. In which case you would have clearly have to restrict taxes on mineral rights by excluding that which is given to Parliament as a tax on minerals. May I answer? Here the entire field of mineral rights is given to the state. And it is both subject to limitations which Parliament may I answer both the points? Point number one. And regulation and development. Point number one. Well, your lordship will not allow a legislative subterfuge. It's most established principle and axiom of tax law that by camouflaging, you cannot use the measure. Therefore, Dr. Singhvi, is that, look, you can only tax the right to extract minerals. Your lordship put it differently. It must have no nexus at all with the actual extraction. No, that second point, you're right. I'm saying something else. Your lordships can let division benches decide the individual case. But your lordships as 9 judges must lay down that what you are given an entry is only mineral rights. Mineral rights can't be equated with minerals, but that will legislative subterfuge. A taxable event can be changed by a measure completely. Now just see, Manas. A grant is well understood. Your lordship taxes, Manas. I mean, in the very, very minor sense. Forget this area for a moment. Huh? Property tax. Go back to basic property tax. State can levy stamp duties. Yes. Well settled principle of law that a stamp duty is never a tax on the transaction, but on the instrument. It's very well settled since independence. Now, all states, including Maharashtra, from where both Brother Oak and I come from, while levying a stamp duty on an agreement to sale, they use the measure of what is the measure which is used? The market value of the property. I appreciate. Right? But does your lordship know clearly the difference? And that that's the problem. But your lordship clearly knows at that point the clear difference between stamp duty and any other duty. Today, you are right. You will have to tell the states. You will have to tell the states that, look, you can levy a duty only on the instrument and not the transaction. So the underlying market value of the asset which is transferred, you can't use at all as a state. I'm asking myself, that's barred to you, sir. The test laid down by the 9... This can never be. No, well, if the once a field is given to the states or to the center, you can choose any numerous formulations the legislature can frame. The field given is by unique language limited to tax on mineral rights. The field given is not a tax on minerals. Your lordship will not give them a field wider than that is given. And today... But the measure can always be suitably... measure cannot change the... little caveat is what RR Engineering said, that your measure should not assume the character of the tax. I am saying, if your lordships will lay down the guideline, then the division benches will decide in a particular case. But the guideline cannot be that, today you can camouflage a mineral tax, a tax on mineral rights, by levying it on the entire extraction of minerals. That will change the character of the tax. Your lordship has to only lay down the guideline, as two of my lords have formulated. The actual thing will have to be seen act by act. But what is given, this is on the assumption that the states are given something.
The states are given a taxing right on mineral rights. They are not given a taxing right on extraction of minerals. Why has entry 50 not used the words of 52, 53, 54 or 23? Is my question to myself. Why has entry 50 used unique words not in 52, 53, 54 and 23? It's as simple as that. And 9 judges should. Referred or not referred is not the point. Today, the Lordship should lay down this guideline. Mr. Singhvi, now your argument comes to this. Yes. 57 Act does not take away power of the state legislature under 50. Without prejudice. Correct. No. They go on taxing on mineral rights only. 50 is mineral rights. Tax on mineral rights. Yeah, but the whole question is, what is mineral rights? No. So therefore, your argument is yes. 57 Act does not take away the power of the state legislature to that levy taxes on mineral rights. This is an alternative argument, assuming that we are wrong on the earlier arguments. That you must limit this to mineral rights only. That's obviously a without prejudice alternative argument. If I'm right in the first argument, they have no rights at all. And therefore, your contention is that it should be only a tax on the right to extract. That's right. And must be agnostic to the actual extract. That's all. In whichever way a Lordship frames it, grant or whatever. Dr. Singhvi, fine. Restrict the Then power of the next. We can't do it to Parliament. Likewise, we cannot do to the state legislatures also. Well, as your Lordships in interpreting 50 can interpret the language of 50 and say so clearly. Your Lordship would be allowing the grant to be governed by something which happens post-extraction. The language of 50 which you are interpreting is very clear. Please don't allow it to be expanded without prejudice. The fifth and the two last points. The fifth point is at pages 322 to 324, 2 pages. This is settled by 2 constitution benches, Ingir and Tulloch. They are quoted in A47 and A48. It's a very short 2-minute point. Once 23 is denuded, then 66 cannot lie, because 66 is a piggyback provision which lies with 23. Once entry 23 of list 2 is denuded, then entry 66 square fees. Entry 66. Yeah, entry 66 is the entry for fees, list 2. Oh, the fees. Yes. Pro tanto gets eclipsed or inoperable or inapplicable. The judgments are clear, Mullahs. My paras, the Lordship will note, are 47, 48 and 49 at 322 to 325. They are Hingir, Constitution Bench, Tulloch, and Mullahs, Mr. Sirvai has clearly, very unequivocally in his usual style in A49 of my para. I've quoted that. Said so. Not that Mullahs, any one person is dispositive, but this is Mullahs in the same trend. Now, Mullahs, the last point. Yes, I'm sorry, this should be said. The reason for this fifth point of 66 is para 110 of Kesharam. That will be, Mullahs, with great respect, ridiculously broad. It says all fiscal levies. Then your Lordship will have validation of all fiscal levies by whatever name called, including 66 is a fiscal levy. Para 110 of Kesharam says all fiscal levies is clearly overbroad. Your Lordship, Mullahs, now laying down the law for. Now, lastly, Mullahs, just turn to page 338. It takes exactly 5 minutes. It's a very interesting 10-page analysis of Kesharam. I'll read less than a page and a half. 338. Mullahs, Kesharam, with deepest humility, and this is grievously wrong. It's not wrong, it's grievously wrong. And why is it so? Again, it doesn't matter. Your Lordship is 9 judges, but your Lordship should know this, because it is really. So first para is C 1.1 at page 338. Point obvious: 5 judges cannot effectively overrule or sideline 7 judges. That's an obvious point. I've cited the case law, not required. That's my para 1.1. They had to refer it. With this kind of surgery, they could not have said 5 judges, we are interpreting, we are distinguishing.
It's completely changing. Second error at page 339 of my note. The typo point is answered by C.2.2 and 2.3 at 339. Well, I can understand your lordship saying something. With the para quoted by me in C2.3, how can you say, Malas, that it's India Cement held that royalty is not a tax, and by typo it became a tax? You can say that conceptually I don't agree, I refer to. This will, Malas, redefine the word typo. That is, Malas, C2.2 and 2.3. India Cement is saying with, Malas, guns blazing categorically. And I've just read a 2-month later judgment by the same person who presided over India Cement, saying that we held that royalty is a tax. Third error is C 3.3 at 340. Whereas the errors are explained in much more detail. I'm only pinpointing 1 or 2 paras each. Well, as it says, and this is where something grievously wrong, it says that India Cements looked at 2 High Court judgments, Mysore and Patna. Then it also looked at 4 other judgments. And India Cements is wrong because it really intended to follow 4 judgments. Now, this is answered very clearly in C 3.3. My lord is ticked. Those 2 judgments are given. 3.3 at page 340. Don't read it. Go to the real relevant parameters. 4.3. India Cement noted 4 lines of cases and 2 lines and said we prefer 2 lines. I hope I am clear on this. That's 4.3. What your lordship prefers is not the point, but Kesharam can't say in 5 judges that India Cement overlooked 4. And why did it choose 2? It cited all the 6. It cited 2 left and 4 right and said we prefer the left. Why can't it say so? And who is Kesharam to say so, Malas? Then, Malas, the 5th error is at 5.2. This, Malas, they say, they brush aside India Cement in Malas Kesharam. I've given the Kesharam paras also. That was India Cement was a case of cess on royalty. And therefore, there's no occasion to decide royalty is a tax or not. But Malas, that forgets. See, in this year, will only tick 5.2 and 5.5. Only 2 paras. 5.5 is Malas at 343. They were no doubt dealing with a cess. But the para says cess is a tax, royalty is a tax, therefore tax on tax we don't accept. Says clearly the paras are quoted by me. Now we've seen the matter as a matter of first impression. So I'm done, Malas. Thank you, Dr. And lastly, Mr. I'm deeply obliged, Malas. The Lordship will see the written submission for the few things I've left out. I'm very deeply Thank you, Dr. Mr. Ganguly. I'm very deeply obliged for the accommodation on time also. Yes, Mr. Ganguly. Should have. The parties I've appeared for, I've given here.
May I please lodge this minute? Lord, I beg to appear primarily for one of the PSUs for the coal producers. That's my Lord MCL. Given the respondent number 8 and all the numbers are given. Lord, I have given my written submission to the first trench of our submissions. I don't want to. Can you just give us a reference? Volume 2. Volume 2. Volume 2, pages 4 to 44. Lord, I beseech your lordships to kindly allow me not to read them, but I'll treat them as read, so that your lordships will have it, the text before you, and you know what I'm doing. So I'd be in view of the paucity of time, because your lordships have rationed their time. So in view of the paucity, my lord, I would try to be as brief as possible, making only the essential points. So very briefly, without going into my submissions right now, my lord, detail. First and foremost, your lordships have had enough of argument on both sides as to what is the scope of interpretation of the relevant entries. I would not go deep into it, except what I have to say at the beginning, because others I will not be in a position to develop my argument. 50 lordships have seen, we are only on 50 now. Just give us the volume so that we just have a look at which one. Volume 2, page. My submissions are in volume 2, not page 4 to 44. 7 actually starts the index. That came in your earliest volume. Yes. It's actually PDF page 7, I think. Yes. Oh, I'm sorry, Lord. No, we have got it now. No. This is my first one. And their second set of submissions, Lord, with reference to the particular coal mines, that your lordship will get, Lord, in volume 2G, page 21. These are the two sets of submissions. Volume 2, my lord, is the first one, and 2G is the second, which is with reference to the Coal Bearing Areas Act. No, I'm not reading. Oh, then it's okay. No, I'm not. Then you can just formulate it. I just then you can just give a reference so that your lordships can read at your convenient time. But briefly, I'll just keep my summaries, my submissions. Your lordships have heard for so many days the scope of the various entries. First proposition, that a law made by Parliament under NT 54 subsumes the entire subject matter under NT 23 of list 2. There is no doubt. On that, there is no caveat. It is accepted. Because they are the same subject matter dealing with the law, and 54 undoubtedly covers the entirety of NT 23. The question before your lordships, for your kind consideration is what is the scope of 50? Because 50 also has a reference to law made by Parliament with regard to a subject matter, that is mineral development. Even your first proposition may not be, maybe a little overbroad, that a law made by Parliament under entry 54 of list 1 subsumes the entire content of entry 23. That may not be correct, because then that would be glossing over the words to the extent to which. Quite right. To the extent Parliament has covered a field under entry 54, that field is taken out of entry 23. I agree with your lordship's observation, but only one thing I was wanting to say, no one has suggested to you that something else is left out in the 23 which is not covered, but this is a broad proposition. Right.
which is an accepted proposition. If there is some issue, somebody can say, no, there is still some, if it's left in 23, it's all right. Yes. But no one has claimed that they have such a right. And you know, the decisions of this court, starting from Hingiri Rampur, till Millard India Cement, all of them say so. That NT 54 really subsumes, covers the entirety of the subject matter of NT 23. There is no caveat on that at all. Now the question is, Millard, 50 is a tax entry, no doubt. And that is how Millard, the arguments were advanced from the state, that look, you go by what the Supreme Court has said, Millard, since Sundaravai, that tax entries are independent, other entries are general entries. Tax entries are not governed or controlled by this is true. Millard. That's the arrangement of the broad arrangement of the Constitution and various items in the 7th schedule to the Constitution. The broad classification. So Sundaramaya was not considering, Millard, are there any exceptions at all? First, they were not considering that. Broadly, you see the tax entries are separate. The general legislative entries are different. They generally they don't overlap. But 50, everyone has accepted, Millard, that 50 is a sui generis provision. It is a tax provision, no doubt, but it allows a law made by Parliament, which is not with reference to a tax entry, to control it by laying down limitations. A limitation, Millard, I think is the word which is used of wider import. Limitations will not have no limitation. Limitation would mean any kind of limitation. Any kind. You know, how the Parliament would have visualized, Millard, we cannot. From time to time, you can only test the Parliament's power when it has exercised that power of limiting the scope of NT 54. Whenever the matter comes up before a Lordship's, Millard, you will test it, whether it is limiting or not limiting. But there cannot be, Millard, a broad theory that limitation means only A, B, C, D and not D, E, F. Limitation of the type that we look into from 54 itself, that is, has to pertain to regulation and development. Of course, no doubt. Those are the most important words, Millard, qualifying. So those words bring us back to entry 54, because entry 54 is the legislative entry which authorizes the Parliament to make law on that subject. Regulation and development. To that extent, it is not absolute. No, it is not. It is not. I'm not saying such. No, I mean, we just. It's a law made by Parliament in exercise of its powers. Under power is of course 246, but it's subject, which is a general subject. Parliament has been given the power to regulate this by limiting the taxing power of the state. That's the significance of this entry, Millard. Having said that, that's the scope. First step in the interpretation of entry 50. The next what my friend Mr. Singh was trying to argue. If you look at the entry, Millard, it is not a tax on minerals. That could have been so. Very simple thing would have been, Millard, Constitution to say taxes on minerals. And then you say what you are subject to, etc., etc. But the Constitution makers have not said so. They've chosen a different expression, not minerals. Taxes on mineral rights, obviously, because they were aware that there is a clear distinction between mineral and mineral rights. They're not one and the same. My friend has already given you that exposition. So therefore, while your lordships are interpreting Millard entry 50, kindly bear this in mind. This is my humble request. That the entry would have to be. I have to ask you.
नोटेड है मिनरल ऊपर। Orange. Orange कोताय? नहीं, orange नहीं है। Only what is the core of your submission? Core of submission is this, Milord. The scope of entry 54 is not an entry with reference to levy of taxes on minerals. Entry 54. No, entry 50. That we got. I made a note of that. It's not an entry for taxing minerals. But mineral rights, that as you rightly said, Dr. Singhvi has chosen to use a different expression, mineral rights. Obviously, Milord, it has some meaning. And I cited some of the literature on the subject, corpus juris, etc. I will give you a lordship to refer. What is the next point? Milord, so therefore, this power has to be only with reference to mineral right and nothing else. Right. The question is, has Parliament made a law with reference to entry 54 restricting that right, which is authorized, not mineral, but mineral right? Has Parliament enacted a law with reference to developmental mines and minerals, restricting or limiting the power of the state to tax mineral rights? So if the first concept of mineral right being only a right to extract mineral and not a right in the minerals themselves, there's a world of difference between the two. On your fourth point, has Parliament enacted a law limiting the power of the states to tax mineral rights? Is the question, Milord? Then your answer is yes. Yes. The MMDR Act is that sort of a law. You're quite right. And to understand that, Milord, what would have to be investigated or looked at is whether the parliamentary law really restricts the right of the state to levy of that kind of tax. So how do you, what is it, without reading the act, how according to you do you say that, well, that is a law which restricts a limitation under entry 50? Now, if the right is to only the mineral right, if the tax is to the mineral right, then that would only mean that someone who holds the right to extract the mineral, which will be milled by a grant of a lease or some other authority. But then are you conceding the fact that there is no limitation imposed by Parliament on the right of the states to tax mineral rights? No, I'm not. They have that under the entry, yes. But now the next question is, has the Parliament put any limitation on that or not? Right. So I'm on that. Parliament has one aspect is that you are saying it's not a tax on minerals, but a tax on mineral rights. Exactly. But according to you, has Parliament left the area of a taxation of mineral rights open to the state? No, it is not. That's what it's coming to. Therefore, the law of the Parliament would have to be tested from that angle. Has it left open or has it decided? According to MMDR has not. Covers that. It covers that field. Right. It provides for levy of, for example, the dead rent.
Dead rent is nothing but without a tax on a right to extract mineral in future time, as and when you think convenient for you. And another important thing you also notice, in the schedule to the act, the dead rent, the measure of dead rent is not per ton, etc., as you find for royalty. Dead rent measure is the extent of land, acreage. That's important. If you're not sure, can you have a look at it? Schedule. Dead rent is provided under section 9A. Corresponding schedule is not the third schedule. I would invite your lordship's attention to that schedule because you have not been shown so far that provision. Not exercising right in respect of mineral. You have the right, no, you have to retain in the right, not exercise. To do with mineral exercise of mineral rights as such, because you are not utilizing the right conferred on you, and therefore you are. No, you are. I would put a beseech your lordship, I need to consider. But what I will say is, you are holding on to the right, therefore you have to pay this tax. Not that you are not exercising. You are exercising the right by holding on to. No, but you pay either royalty or dead rent. If you are liable. If you are working, then of course. Right, whichever is higher. That is because that's not a mechanism to get more money. That's a different matter. Because it's an option for a lessee either to work it or hold on to the right. But I'm only on the point kind of similar to Schedule 3 that gives your lordships an idea as to what is there. Therefore, a lease of mineral bearing lands is not like a lease of any land. Suppose the government grants a lease in respect of some land. Government still, we know that they provide for forfeiture if you have not constructed within a particular period. The idea there is that, well, you have taken a lease for a purpose, you must utilize it for that purpose. Similarly, the same concept in regard to dead rent, that, you are bound to fully exploit the mineral potential of the land which has been leased to you. If you don't, then you have to pay this. No, there was a situation which I'll bring to your lordship. That's another point I have to bring. There had been umpteen number of cases, where, I'm sorry, there lots of some discussion. My lord has seen this third schedule, what it says. it's on acreage. Rates of deed rent. It's on acreage. It's on acreage. Per hectare per annum. So that is what is not contemplated to be the right of the state to tax under entry 50. But that is now being regulated, or you put it in the language of 54, limitation. The reason why it is on acreage is because no mineral is extracted. Exactly. Therefore, a dead rent.
If But mineral it is is taxing the right. extracted, then it is a royalty on the mineral. Quite right, absolutely right. I bowed down to that observation. But when you are taxing the right to extract, that is the dead rent is in the nature of your right to extract mineral, which comes squarely under That is the 80. question, whether payment of royalty or dead rent, whether it is an exercise of mineral right is the question, or it is something else. The exercise of mineral right is holding on to the right. When you exercise that right and you produce pursuant to that right, you are in a different scenario altogether. Because now you have extracted the mineral, they're out. Fair enough. Now, what is the next point, Mr. Ganguly? And just to give a lordship an example, because my lord the Chief Justice was pleased to observe that yes, it is a kind of a deterrent that so that people don't sit on their property and you don't allow the development of the mineral, though Parliament has desired to do so by enacting this law. Similar to what happened was, there is a concrete scenario. Large number of private leaseholders had acquired leasehold rights but never used those rights. Large number of years. So what the Parliament then had to intervene to enact a law called the Coal Bearing Areas Acquisition Act. Acquisition Development. Though that law would be referable to some other entity under this three for acquisition is only there. But this law was enacted for the purpose of giving effect again to the mandate of Entry 54 for development and regulation of minerals. And that act was challenged by, actually the suit filed was basically by state of West Bengal in this court, challenging the Parliament's power to enact such a law. So their contention was, these are our property, how can you acquire our property? We are sovereign. So our sovereign rights can be acquired by Parliament. That power is not given. The Rothschild negative that argument and upheld the validity of the act. There is a constitutional judgment. I'll give you also that judgment is here. And then what happened, interestingly, as a result of that act, all rights of the existing leasehold rights, whosoever had it, right to extract mineral, those vested in the center under the act. But that act, Parliament authorized the central government to get the mines work through government companies on such terms, etc., as they choose fit. So that act was given effect with that manner, where the government companies came in and they states will not then question further to the government, to the central government, saying that we don't get any royalty from this because you have acquired our property. And it's a huge loss of revenue. The central government accepted this, and eventually Parliament amended the law in 1971 and made a provision under that act, introduced new provision, section 18A, enabling payment of royalty even in respect of these lands which are vested in the central government. That act I have to place before you because one case in which I'm appealing that directly relates to that case. That act you also will find is that volume 4N L 4L page 2. 4L page 2 of that volume, you will get that act. I have to place that. I'll come to it immediately. What is the next point now, Mr. Yes. The other point which has been already argued, but I owe a duty to the court to explain to your lordships what happened exactly in Keswaram. How did Keswaram come to be referred to a bench of 5 judges? That Keswaram itself extracts. I have to show you that. What is the controversy that the Keswaram was asked to decide? It was not whether the tax on royalty is a tax on mineral rights or on minerals, and whether royalty is a tax or these are none of these issues were conversed at all there. I'll immediately show you that that judgment. I will show you quite a few paragraphs. So the scope in Keswaram was completely different. This was not an issue at all. Much less reconsideration of what happened in the Indian cement. But I have to give it to the ingenuity of my friend Mr. Dwivedi.
after the hearing was concluded by the Constitution bench, my lord, he came out with his hearing is closed. He came out, stood up to say, I have point that there is some kind of a typographical error in the judgment. This was attempted to in an earlier case, in the Odisha Cement case, but given up. This was raised, so that we asked the court, are you going to take up this issue now that the hearing is concluded? So Chief Justice Khare, who was presiding the bench, said, certainly not. It was a closed chapter. So nobody addressed any argument to that bench at all on this question. Whether there was an issue or not, let's not go into that. This is a factual thing. Why to go into all that? Actually, we will really go into a unnecessary quagmire. If we start now. No. This is an historic fact. Unfortunately, we didn't have the transcript facility in those days. To come another case then, whether it was argued, not argued. Yeah, that's why your lordship find, my lord. Lordship do not find any mention at all in the dissenting judgment of Justice Sinha. Just that limited significance because that was one of the reasons why the reference was made to us. So now, once a reference is made to 9. I'll leave it at that, my lord. I only just pointed to how it happened, but that this is important to know, my lord, that in Kesharam this was not an issue at all. If we were a bench of 7, then certainly whether Kesharam could have done this, whether there was an error in adjustment would have arisen. So we would be bound by adjustment. We were a bench of 7. May I just take your lordship then through that Kesharam's decision only? No, not necessary, Mr. Ganguly. Not necessary. No, I'm not going to that. I'm only showing you what is the scope there and how it has been dealt with. That's okay. We'll look at your note. Something on the core now, if there is. Yeah. Otherwise, we'll conclude. Just one paragraph, should permit me, volume 5 possible. Not necessary to read Kesharam. No, I will not. I would not read. I will only give you the lordship the paragraph. After Mr. Ganguly, Mr. Bagaria will be arguing next. Who? I think sequence Mr. Bagaria, Khambata, myself and Mr. Gu. Subject to 3 o'clock. Mr. Bagaria, Mr. Datar, Mr. Khambata, and then? Is somebody raising both the palms? No, I said, is somebody raising both the palms because we found many. Only one. No, then let me take your lordship to the Polluting Areas Act directly, because that's an additional point. So may I visit your lordship kindly to see, my lord? Volume 4L. What do you want to refer to it for, Mr. My lord, for the Coal-Bearing Areas Act, your lordship have not seen that. And where there is directly an argument that once the mines come within the purview of that act, the tax under entry 50 in any case not leviable. I want to show you also that act, how it is. But do we have to deal with that? Let a smaller bench deal with these issues, particularly, I think. What is the effect of the act? What is the effect of the act? We shouldn't really. Imposed by the parliament. No, this is also. Mr. Dwivedi, I think that's a better course of action, isn't it? This also, my lord. If we start interpreting individual legislations, then we'll miss some legislation. That's not the scope of this reference. Yeah. No, we're not questioning the validity. Broad aspects of the legislations can be kept in view. Anything else, Mr. Ganguly? Or so, if you also just permit me to, Lord, this is an act which is important for the reason that it will throw light as to the scope of Lord Entry 50. That's why I just want to tell you, Lordship, what it is all about. We are not asking you, Lordship, to adjudicate on the nitty-gritty of that provision. No. So, volume 4L, if your Lordship will kindly permit me. Page 2. If you will see the objects and reasons at page 2.
Show us the relevant provision, Mr. Ganguly. Where the provisions are, first, Lord, can you permit me to? 4A. Yeah, let's go to 4A. First, see, Milord, the preamble. If you are not going to preamble, Milord, at page 5. Okay. You're making, and then we can maybe look at everything again. Section 4 is the preliminary notification which is issued by the central government once the central government has come to the conclusion that coal is likely to be obtained in an area. So, section 4. Then, Milord, a notification under section 5. It is similar to Milord, the land acquisition provisions. Effect of notification, what happens, Milord, all prospective license, mining leases, they all cease to have any effect at all. The whole purpose was to acquire, Milord, the mining rights of those who are holding on to the leases and not operating the mines at all. Then section 6 is a compensation to them, Milord. That's not very relevant. Section 7. Because, I don't think that's been the scope of the reference. It's not argued this side. If we leave the interpretation of the act, the impact of the act on the, on the appeal or whatever there is before the regular bench. Let's not go into the. I understand that, Your Lordship. Can you leave it to the regular bench to go into the question of interpretation if there be any? I was only giving Your Lordship the scheme of it. So just similar section 10, what happens? Let's leave it, Mr. Ganguly. I don't think we need to go into the act. Unless there's a formulation which you have and then want to just sort of illustrate that formulation with reference to a particular. I'm referring to this act for the formulation, Lord, that this is clearly an example of how you can, the central government can control exercise of its powers under NT 54 and some other powers. This is also NT 42 of list 3, because acquisition is specifically dealt with under 43. But 40, the power of acquisition was exercised, Milord, in furtherance of its obligation under NT 54. That's how I was reading to your Lordship, Milord, the preamble. Preamble says, Milord, this that that we have large deposits of minerals. They remain unexploited. They are required for the betterment of the country and in the larger interest of industrial development in the country. Therefore, Milord, they cannot be left to be unworked for all these years. So we should acquire. That was the whole update. So this is nothing but augmentation of Milord, a law in terms of NT 54. Mr. Ganguly, anything else now? NT 54. Milord, a few portions, Milord, I have to show to your Lordship from the India Cement judgment, just 1 or 2 paragraphs, to indicate how, Milord, India Cement dealt with the issue. So if your Lordship will kindly permit me, it is volume 1, Milord, it is volume 5H. Volume 5. Milord, volume 5. I was just reading it. Milord, 1151. All fees traceable to NT 20.
Yeah. 33 of India. It's okay, I got it. Para 33 jeta ho na? 33 articles got. Page, my lord, 1200. No, first, your lordship will just once again, my lord, see the question that was formulated by the court at page, my lord, 1155, foot of that page. Question involved in the special petition and the repetition is whether levy of cess on royalties within the competence of the state legislature. And they go on to discuss this, my lord. Then it was paragraph 24 at page, my lord, 1166. Here the lawsuits are discussing the scope of entry 15 of list 2. And then referring to Anant Mill's case, my lord, they also say all minerals which are under the earth can contain under certain circumstances fall under the expression land. But a tax on mineral rights is expressly covered by entry 50 list 2. If it is not under the head taxes under the 49 of list 2, they will render 50 redundant. So that was the argument note with regard to entry 49. Then kindly turn to paragraph 29 at page 1168, where the lordships are now discussing the case on HSI Murthy's case. Murthy's case was the issue whether Murthy has correctly laid down the law or not. And so only what are you driving at actually? Paragraph 20. What are you driving at? What I'm driving at is, my lord, India Cement was directly concerned with the question as to whether royalty is a tax or not. Why? Because their lordships are considering the validity of the earlier judgment in Murthy's case. Murthy said, my lord, a tax on royalty, that's what it says, on royalty is a valid tax. So that was the issue which was before the court. The court was examining whether that is correct law or not. It is in that context, my lord, their lordships observe at paragraph 29, page 1168. Passage is quoted, my lord, from HSI Murthy's case. Last 4 lines of the passage. After having said, my lord, that cess is valid on royalty, the lordship says, our attention was not invited to the provision of any law created by Parliament. In the context of section 78 and 79 of the scheme of those provisions, it is clear that the land says in the truth a tax on land under entry 49 of the state list. This is what Murthy has held. Now they are considering correctness of that properly. Next paragraph. Paragraph 30. It seems therefore 33 could be what you are driving at, I think. 33, para 33. Yes. I think that is where. Not, I was going to 33, but I want to show you first also this, that the lordships found that section 9 is the provision under the MFDA Act, which covers that. That is stated in paragraph 30. And what the lordships have said is, last sentence, on that is tax on royalty is not a tax on mineral right. It would therefore be in any event outside the company's state legislation. So they made again a distinction between mineral tax on minerals and mineral rights. And in 32 first, my lord, and 33. 32 first, it is contained by Mr. Krishnamurthy that the state has a right to tax minerals, which is completely different from what is the scope of entry 50. Now, my lord, that is being dealt with. Paragraph 33. In any way, royalty is directly relatable only to minerals extracted and on the principle that the general provision is excluded by the special one, royalty would be relatable to entries 23 and 50 of list 2 and not under entry 49 of list 2. Whereas the fee is covered by the central power under entry 23 or
NT 52, the impugn legislation cannot be appealed. And then, my lord, paragraph 34, having said this, my lord, they clearly said that royalty is a tax, and the cess on royalty is beyond the permissible limits of the power of the state. This is very good. Then the lords go on to discuss paragraph 34. See the beginning. In the aforesaid view of the matter, we are of the opinion that the royalty is a tax, and as such, cess on royalty, being a tax on royalty, is beyond the competence of the state legislature, because Section 9 of the Central Act covers the field, and the state legislature is denuded of its competence under NT 23 of this 2. Then we note the last sentence: in any event, we are of the opinion that the cess on royalty cannot be sustained under NT 49. That's another argument. And then we note the royalty on a mineral right is not a tax on land, but on payment of the user of land. Now, this is being picked up, this last sentence, to suggest that India Cement did not have the occasion to decide whether royalty is a tax or not. That, with great respect, that is the genesis of Kesharam's beginning. That's how the Kesharam begins, that say, to distinguish this judgment of 7 judges, and that's how the Russians have found some possible error, etc., etc. Whatever is that. That part I don't want to go over it. But this is because of incorrect reading, of this paragraph 34, which flows from what has been held in the earlier 2 paragraphs. And it is very clear from the earlier 2 paragraphs that cess on royalty is a tax. Royalty is a tax, and cess on royalty, therefore, is forbidden. Very clearly says so. And there is also a reference to a judgment by Justice V.S. Verma, then there, as his lordship then was acting Chief Justice. He has also held that the development says under Section 9 of the Madhya Pradesh Act is ultra virus. They also did not go further into it because the appeal was pending before this honorable court. Royalty. But I was referring to that coal bearing areas act for the limited purpose. That how does that act also reflect on the interpretation that your losses are going to place on NT 50 is this. That's a law which has acquired all the rights of the existing leaseholders. And then the government, in furtherance of its objective under NT 54, for further development of mineral development, has compulsorily directed that those lands would have to be developed for the purpose of mineral development. And that's how they appointed the government company. That act now provides by an amendment to Section 18A without payment of royalty. So these government companies are paying royalty to the state because of that new introduction under Section 18A is from 1971. At the same time, now there is a further demand under the Odisha Act from the same companies by saying you now have to pay a cess, which is not calculated again at the rate of royalty. Right. Thank you, Mr. Ganguly. We'll, now, after lunch, Mr. Bagaria, we'll hear you after lunch. For 15 minutes, we'll give Mr. Bagaria and then Mr. Dada.
May I address after Mr. Bagaria? Milord, we are going to conclude. We are going to conclude all arguments on this side at sharp 3 o'clock. One second. 1 second. All of you sit down together. Whoever, 1 second. We are not going to do this. We are not going to haggle in ration time between council. That's for you all. Between all of you, you decide. You have got 1 hour. Who will take what? If one person takes the entire hour, I'm sorry, we'll have to conclude at 3 o'clock. So we leave it entirely to your good allocation on who will allocate, how you will allocate time the last 1 hour before you conclude. I'll take 5 minutes because my case is completely different. My English seems to be improperly understood. You may take 5 minutes, you may take 50 minutes, you may take 59 minutes, 59 seconds. But that eats into somebody else's time. Just 5 minutes. All of you. Your Lordship, Why don't you understand what I'm trying to say? Why don't you understand what I'm trying to say? At 20 council, if we take 5 minutes for all of them, it goes to 100 minutes. So between all of you, at lunch as you leave the court, please ration out the time interstate. We are giving now 1 hour. We have made it, yesterday we said till 2 o'clock. We have extended it by 1 o'clock, by 1 more hour. 3 o'clock, Mr. Dwivedi will start arguing. Between all of you, decide how you will divide that 1 hour between ourselves. We have no difficulty. We'll hear everybody within that 1 hour. may I just say then that will your Lordship segregate that Malanadu coalfields and refer it to a regular bench? Will your Lordship segregate Malanadu coalfields? What's segregated tomorrow? That segregation we'll do tomorrow. Respondent number 87, because We that's can't do it like covered this. by the We central can't do it like this. You know, there'll be a mess if you start Very just well. throwing things like that. Very well. What is Maha? We are looking at this Manoj, on- conceptually. Tomorrow, all of you give us that these are the matters which have to be detagged. That's why we said that. We'll do, right. Manoj, on behalf of the NTPC, we'd go by what the learned solicitor has said, Manoj. All right, Mr. Bagaria, then after that followed by Mr. Khambata. Yes, yes. Yes, Mr. Bagaria, Mr. Datar, Mr. Khambata. Not me put Khambata, he's got some difficulty after. All right. Let Khambata go first, I'll follow him. All right. So Mr. Bagaria, Mr. Khambata, and then Mr. Datar. And All within 1 hour. 5 minutes. We'll try, we'll do it. If your Lordship says so, we You have. may be entirely right, but just appeal to the seniors who are preceding you. That's all.